Dear students, today we will discuss about sampling method. So, prior to this session, we have already discussed about census method. Census method is otherwise known as complete enumeration method, सामग्रिक गणना पद्धति, जो पद्धति रे व्यय सापेक्ष माने it takes a lot of time to collect the information. So, in sampling method it is saves time. This method of data collection in which some representative units are selected from the universe. समग्र माने रु किछि तथ्य संग्रह करिबा, that is sampling. So, some representative units are to be selected from the universe. So, they are treated as samples. Such selected units are called samples. ताको आमे कहबा नमूना, कारण विश्वरु बा विभिन्न माने समुदाय भितरु किछि तथ्य संग्रह करिबा को आमे नमूना बोली कहूचे. The number of samples is called the sample size. Sample size छोटो कि बड़ो, that depends upon the number. केते नंबर नउचे sample. जदि कम नंबर दबा sample size small, जदि अधिक नंबर नबा sample size big, large. The conclusions or inferences जो सिद्धांत करिबा, जो आमे तातर जो सिद्धांत बाहर करिबा, so that inferences are drawn about from the whole universe. समुदाय भितरु आमे तथ्य नबा, जो यूनिवर्स अच्छी बा पॉपुलेशन अच्छी सेतरु आमे तथ्य नबा, that is called sample, नमूना. आमे नमूना विषय जानिछे, जेमति गोटे doctor, one doctor can take the quality of blood by testing one drop of a sample blood of a person. गोटे लोकठार गोटे sample गोटे drop नेला परे तार माने जानि परिबो जे तार माने क्वालिटी कोन अछि ब्लड रो. So doctor can say. So this is called sample. गोटे माने a handful rice from a pack of rice, गोटे बस्ता गोटे पैकेट रु जदि अल्प किछि आमे जदि राइस कलेक्ट करिबा, that is called sample, नमूना. So नमूना पद्धति अत्यंत सहज, कम समय मध्य आमे अधिक तथ्य संग्रह करि परिबा. It is very easy method. So what are the various merits of the sampling method? So in sampling method, first of all it saves time and gives quick result. कम समय मध्य आमे तथ्य संग्रह करि परिबा एवं रिजल्ट मते क्विक मिलिबो, कारण जतले आमे समुदाय तथ्य संग्रह करिबा it takes time to collect the information. So the samples will represent the inferences. So first of all it saves time. प्रथम एटा होची सुविधा. आ कोन सुविधा अछि ना, it is less expensive, व्यय बहुल नुहे, काहे कि कम खर्च रे आमे तथ्य संग्रह करि परिबा, because data are collected from samples, not from the whole universe. So आमे एठी तथ्य जो नउचे नमूना जो समग्र जो रही समुदाय जो आम यूनिवर्स बोली कहूचे पॉपुलेशन, आम तार अल्प किसी नौचे, तेणु समय कम. सेकेंड कथा आम जो कलेक्शन कले आम कम समय लगिला, खर्च भी कम है, तो यह आम सुविधा रही. सो अनदर मेरिट आ कौन सुविधा रही. सो इट इज अडेप्टेबल डिपेंडिंग ऑन द नेचर, स्कोप, मोड ऑफ द इंक्वायरी. So this means that is flexible, not rigid. कारण आमे जो तथ्य आणुचे it is flexible. The investigator will decide how many number of samples are to be drawn according to nature, according to the objective of the inquiry.
लक्ष्य अनुसार जड़े अनुसंधानकारी तार तथ्य संग्रह करे, तार सुविधा अनुजाई से तथ्य संग्रह करे। सो इट इज मोर फ्लेक्सिबल, कौन सी माने एतरे रिजिडिटी नहीं। सो द इन्वेस्टिगेटर कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द माने हिज अकॉर्डिंग टू हिज नेचर, अकॉर्डिंग टू हिज विलिंगनेस, अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस। तो तार सुविधा अनुसार से तथ्य संग्रह करि परिबो, कारण नमूना पद्धति रे यह अत्यंत सुविधा, कारण एतरे माने तथ्य संग्रहकारी से चाहिए तार टॉपिक अनुसार केते सैंपल साइज बढ़ेबो कमिबो, दैट डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टिगेटर। Next merit is this is a mathematical concept as it is based on law of statistical regularity or principles of validity. So, mathematical concept is used to collect samples. See, this law helps the investigator to collect the sample in a very scientific, is a very lucid manner. So, it is another merit. So, next merit is how consider this method ensures administrative convenience, प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक सुविधा अच्छी, because less number of persons are engaged to collect the information or data, कारण administrative convenience अच्छी, कारण माने आमर डिपार्टमेंट गोटे अच्छी that is National Sample Survey Organization NSSO. So, it was established in 1950 to collect samples from the universe, National Sample Survey Organization. So, these are the merits of sampling method. So, what are demerits, what are the defects, what are the loopholes, कौन असुविधा रही? So, this method may give incorrect and misleading results because data are collected from sample, not from all units of the universe. जेहेतु आमे तथ्य किछि नमूना नहीं आमे सिद्धांत रे पहुँचुचे, एई तथ्य शुद्धता कम थाए, कारण एई पद्धति आमको करेक्ट रिजल्ट दे पारे नाही। आमे जो मोटो थिला, आम जो लक्ष्य थिला, ऑब्जेक्टिव थिला, आमे ता ठीक सिद्धांत रे पहुँच पारिबो नाही, कारण बिकॉज ओनली सैंपल्स आर कलेक्टेड, हाउ कुड इट गिव द बेटर रिजल्ट? कहीं ना होल यूनिवर्स जदि आमे कलेक्ट करिबा ताले आमे ठीक निष्पत्ति नहीं पारिबा, किंतु एतर सैंपल्स निया होउछ, सैंपल्स से आमे डिसाइड करछे जे हमर इन्फरेंसेस कौन, हमर रिजल्ट्स कौन. So that results may be misleading. It is one of the demerit. The second demerit, when sample size is big or large, it takes lots of time and energy so as to collect the information. कारण एथर अधिक समय लागिबो, जदि आमे सैंपल साइज बढ़ाई देबा फॉर बेटर रिजल्ट्स तो हमको समय लागिबो, it will takes time. Another thing is it is also expensive, it is समय अपचय हेबो एवं व्ययबहुल भी, कारण जदि आमे सैंपल साइज बढ़ाइबा यह मध्य डिमेरिट. The third demerit अन्य कोन असुविधा रही, this method is unsuitable, अनुपयुक्त, when information is required for each and every unit of the population. यदि आमे सामग्रिक गणना पद्धति कथा कहिबा, जोटा कि आमे कंप्लीट एनुमरेशन मेथड और सेंसस मेथड, ता संपूर्ण भिन्न, एते आमे सैंपल्स नउचे, तो जेतेबेले आमे each and every unit will be taken into account, so sampling method becomes failure. sampling method जदि आमे सब यूनिट को आमे सिलेक्ट करिबा ताले sampling method माने will be null and void, कि जे आवश्यक नहीं, तो ये मध्य गोटे तार डिमेरिट. And last demerit is this method may lead to personal
बायस और पर्सनल प्रिजुडिस। तो ये हूँ पर्सनल बायस अच्छी प्रभावित जड़े अनुसंधानकारी प्रभावित ही तथ्य संग्रह करें दैट इज एवरी पॉसिबिलिटी माने ये प्रिजुडिस अच्छी कारण हुए तो से सठिक तथ्य न आनी पारे सैंपल ठीक सिलेक्ट न करि पारे सो इट मे गिव टू misleading result. So these are the merits and demerits of sampling method. Now we have to go through the different types of sampling. So prior to different types of sampling, we have to discuss about the population and inverse, which was already explained to you in detail in my previous session. So मोर पूर्व कथा क्लास माने कही जे पॉपुलेशन और यूनिवर्स अर्थ कौन कारण इट हूँ पॉपुलेशन और यूनिवर्स इन स्टैटिस्टिक्स इज द एंटायर बॉडी ऑफ टर्म्स और आइटम्स इन व्हिच इंफॉर्मेशन इज डिजायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर और एनुमरेटर। अनुसंधानकारी जिते एंटायर यूनिवर्स रु संपूर्ण तथ्य संग्रह करे ताहाको आमे कहबा सामग्रिक गणना पद्धति। Each and every unit will be taken into consideration while collecting the information. जिते आम तथ्य संग्रह करुचे प्रत्येक तथ्य को आमे संग्रह करिबा गोटे भी आमे लीव करिबा नाही छाड़िबा नाही। So every number of the universe is known as item. प्रत्येक यूनिवर्स गोटे गोटे माने रहिछि नंबर इज also an item. Total group of students in a college कहि परिया गोटे माने population बा गोटे आम कहबा यूनिवर्स गोटे कॉलेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स अछंती आर्ट्स साइंस कॉमर्स तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स अच्छी डिफरेंट स्ट्रीम्स अच्छी एतर मध्य एंटायर कॉलेज रो जदी आम को डाटा नबा दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स। तो होल स्टेट रो जदी नबा केते कॉलेज अच्छी तांको जदी इन्फॉर्मेशन नबा ता मध्य गोटे यूनिवर्स। So this is called the meaning of universe or population that we have already explained previously. So now what is the meaning of sample? Namuna artha kaun? A sample is a part of the universe or population which contains the qualities of universe. जो universe रे बहुत तथ्य अछि आमे ताठु जो कलेक्ट करिबा किछि कलेक्ट करिबा ताले दैट इज कॉल्ड सैंपल नमूना। जदि आमे गोटे कथा कहबा गोटे क्लास रे पिला बसचंती जने अफसर आसी पचारले जे ए क्लास परफॉर्मेंस को अछि तो क्लास रे 128 स्ट्रेंथ अछि समस्त पिला बसचंती अफसर आसी पचारले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स तो किछि पिला तार उत्तर देले आउ किछि पिला पचरागला जेते से पिला समस्त भल रिजल्ट कल देले माने परफेक्टली मीनिंग कहले ताले से क्लास रो मान परफॉर्मेंस भलो अछि बेली कि ऑफिसर कंक्लूजन ड्रा कले दैट इज कॉल्ड सैंपल। तो सबु पिला को 1 बाय 1 पचार परिबेनी तांका पर समय नाही सो से गोटे सैंपल नेले पिला कोन कहूची आंसर कोन ठीकार कहि परथुना नाही दैट इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ सैंपल। सो नाउ we will discuss about different types of sampling. So different types of sampling को मेथड अच्छे को मेथड रे आमे केमती सैंपलिंग कलेक्शन करछे there are different types of sampling method. The choice of a particular sampling method depends upon the nature of the data. आमे को डाटा संग्रह करछे आमे को तथ्य संग्रह करछे तार नेचर कोन what type of sampling method is to be used आमे को प्रकार sampling यूज करबा। So the type of distribution and the need of enquiry leads to types of sampling. So when sampling method is used we have to take care the nature and need of enquiry आमे को संबंध रे तथ्य संग्रह करिया को चाहूचे को प्रकार तथ्य जदि आमे कहिबा देशर जनसंख्या विषय कथा कहबा आमे सैंपलिंग यूज करि परिबा नाही कारण सेटा ईच एंड एवरी यूनिट विल टेकन इनटू अकाउंट। जदि आमे गोटे कथा कहबा गोटे ब्रांड प्रोडक्ट तार केते रहिछि माने
यूज रही केते लोक गोटे ब्रांड प्रोडक्ट केते यूज करछंती आमे ये मेथड यूज करिके आमे कहि परिबा केते यार फेवर दउछंती केते अनफेवरेबल गोटे ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट रो से प्रोडक्ट को केते लोक फेवर करछंती से प्रोडक्ट केते लोक अनफेवर करछंती सो आमे सैम्पलिंग मेथड रो जानि परिबा so you know तो sampling is of two types so random sampling purposive sampling so random sampling is again subdivided into four types ये चारि प्रकार गोटे simple random sampling stratified random sampling systematic sampling multi stage sampling so we will discuss one by one आमे गोटे पर गोटे डिस्कशन करिवा What is the meaning of simple random sampling? अहेतुक नमूना पद्धति जोटे आमे कहूचे so simple random sampling it is otherwise known as method of chance so under this method each and every unit of population has equal chance of being selected in the sample तो एठी होची कोन आमे तल सैंपल सिलेक्शन करछे आमे प्रत्येक आइटम र चांस अछि एटा चांस बिल कहूचे मेथड ऑफ चांस प्रत्येक गोटे क्लास रे 30 स्टूडेंट बसचंती जन शिक्षक पचारे प्रत्येक पिलार हाज इक्वल चांस ता 10टी पिला प्रश्न पचारे तो 10टी पिला जो प्रश्न पचारे माने लास्ट पिलार भी चांस अच्छी इज टू बी सिलेक्टेड तो 30 जन को पिला मध्यरु से रैंडमली पचारे हुए तो 1 नंबर पिला पचारि पारती 5 नंबर पिला पचारि पारती 15 नंबर पिला पचारि पारती 30 नंबर पिला पचारि पारती एही 10टी सैंपलिंग नहीं पारिबे सो in this method each and every unit of the population has equal chance of being selected in the sample sample रे समस्त chance अछि samples are drawn from the universe at random random means माने तांको ऊपर डिपेंड करूछ पर्सनल so samples are drawn in two ways दि प्रकार अछि एटा बुझेबा हमें simple random sampling दुई माध्यम रे हमें simple random sampling आमे नमूना ड्रॉ कर परिबा गोटे लटरी मेथड लटरी अनदर रैंडम टेबल नंबर सो यू नो लटरी सिस्टम जेटा हमें कहूचे लटरी सिस्टम इज सम स्लिप्स आर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द होल यूनिवर्स स्लिप हम तैयारी करबा लटरी सो द नंबर ऑफ स्लिप्स आर बी सफल्ड रीसफल्ड इन ए बॉक्स जो आम जो टोकन करवा से टोकन बॉक्स भीतर रखा सफल रिसफल करवा द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्लिप्स आर टू बी ड्रन वन आफ्टर अनदर फ्रॉम द बॉक्स आम गोटे पर गोटे ड्रॉ करवा जी आम एज पर आवर रिक्वायरमेंट ओके द सैंपलिंग यूनिट्स कॉन्स्टिट्यूट सिलेक्टेड एट रैंडम आम लटरी विषय आम माने आम अधिक जानीचे कारण विभिन्न मेला हुए से लटरी लगे कौटी कार थिबो लेखा थिबो टीवी अन्य सब थी से लेखा थी जे बर्तमान अमुक तारीख दिन लटरी ड्र हम सो से 5000 लोक अप्लाई माने देले माने टिकेट किणले सो तांको नंबर दिखाई से नंबर माने तांको ड्र हम 10टा प्राइज दिज्व तो 10टा प्राइज पाई नंबर लिखाई गोटे ले मैन को डक 10टा ड्र हम इन द प्रेजेंस ऑफ माने 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 पीपल लोक माने सामने से ड्र करा तो सिटी रैंडमली ड्र करा सो साइज ठीक थी ड्र करा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सैंपल यूनिट्स सो दैट कॉन्स्टिट्यूट सिलेक्टेड रैंडम यदि हम 5टा सैंपल ड्र करा हम 5टा बाहर करवा 500 लोक 5टा बाहर करवा से 5टा ओपन करा कार सिलेक्शन है सो दैट इज कॉल्ड लटरी मेथड सो इट इज वेरी कॉमन एटा समझ जानी जे बर्तमान लटरी मेथड रे लटरी उठला गोटे कार लटरी उठला गोटे टीवी उठला कार लटरी गोटे बाइसाइकल उठला तो विभिन्न प्रकार आम जानीचे लटरी मेथड इज वेरी सिंपल मेथड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन सो अनदर मेथड इज रैंडम टेबल नंबर सो रैंडम टेबल नंबर सो दिस मेथड इज डेवलप्ड बाय LHC Tippett one of the statistician so Tippett has prepared this table so he constructed 4 tables of 10,400 each गोटे रैंडम टेबल नंबर 10,400 नंबर गोटे टेबल तैयार करछंती all the items are
first put in a series. तो सेतरे सीरीज अनुसार तांकर नंबर अच्छी. Then a page from the table is taken out. गोटे टेबल रो आमे किछि नंबर आमे बाहर करिबा. And the serial number of the sample are got from the first page. प्रथम पृष्ठरू आमे तारो सीरियल नंबर बाहर करिबा. को को नंबर आमे चूज कले. So this is the way in which samples can be drawn from the universe, from a particular group, from a particular organization. So आमे sample draw करि परिबा. Now dear students, you know, out of these two methods, the lottery method is more used in practice. ए दुटा मेथड आमे देखिबा. lottery method is commonly used in practice. It is very easy and simple to understand and easy to follow. आमे सहज रे मेथड को आमे अडॉप्ट करि परिबा for our purpose. So now some merits of this method. So it is an easy method. It is easy method. Simple random sampling is easy to calculate. So every unit gets equal chance for selection. प्रत्येक यूनिवर्स प्रत्येक यूनिट रो इक्वल चांस अच्छी सिलेक्शन करिवार. कहा को अवॉइड करा जाउ नाही. So it may be drawn randomly but has equal chance of being selected. So third merit, it saves time and money. जेतु आमे यूनिवर्स सबू यूनिट को आमे कौन सिलेक्ट करना है कारण फ्यू आमे सिलेक्ट करछे, दैट इज कॉल्ड सैंपल. इट सेव्स टाइम एंड मनी. So next is there is no chance of a personal prejudice or bias. इतरे पर्सनल बायस नहीं, अनुसंधानकारी तो प्रभावित होवार चांस नहीं कारण प्रत्येक यूनिट रो इक्वल चांस अच्छी सिलेक्शन करिवार. So these are the merits of simple random sampling. So ये sampling रे यही सुविधा अछि. There are some demerits also. ए मेथड रे मध्य केते गुड़िक रही दुर्गुण मध्य रही दोष मध्य रही. कौन? If the universe is small, this method is not applicable. जो यूनिवर्स स्मॉल हो गला से सैंपलिंग आवश्यक नहीं कारण यूनिवर्स बिग हम से सैंपलिंग दरकार कारण छोट छोट ऑर्गेनाइजेशन सैंपलिंग दरकार नहीं कहीं यूनिट्स आर फ्यू. सो दिस मेथड फेल्स टू apply. So it is one of the demerit. Some irrelevant items may creep into the sample. आमे एतरे केतोडे sample अछि. Some irrelevant items that may be creep into sample. ताकू माने हमको अवॉइड करिवार माने कष्ट. So these are the demerits. And last demerit is different components may not get proportionate representation. Different proportionately आमे कौन सी जिनस को आमे करि परने काहे कि एटी होची so few units are taken into consideration. So there is no question of proportionate representation of samples. So these are the merits and demerits of simple random sampling. Now next we go to stratified random sampling. It is another method, stratified random sampling. So in stratified random sampling, it is also known as mixed sampling because it is a mixture of a purposive and random sampling. There are mistake अछि. Stratified random sampling को आमे कहबा कोन mixed sampling. So एतरे होछि mixture of a purposive and random sampling. In this method, whole universe is divided into some components. तो whole universe को आमे केतोडी components रे अंदर डिवाइड करछे. According to the convenience, then samples are drawn randomly. And वो convenience अनुसार आमे strata तयारी कर stratum, different stratum or different
groups or different components are to be prepared by the investigator. You know, dear students, so the stratified random sampling has been divided into different components, into different stratums. So आमर जो यूनिवर्स को आम छोट छोट विभाग व्यक्त करवा एवं प्रत्येक विभाग आम कि सैंपल ड्र करवा स्ट्रेटम. So that depends upon the convenience of the investigator. So the then samples are drawn at random. ताले samples random रे draw करा जिवो. For example, आमे गोटे उदाहरण नबा. So if we want to know the economic condition of the employees of an industry, गोटे इंडस्ट्री एम्प्लॉय मानकर इकोनॉमिक कंडीशन केमती अच्छी, तो आमे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज आर देयर. जो माने विभिन्न वर्गर माने अच्छा कर्मचारी से मानकर इनकम केते अच्छी, हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, low income group, very low income group. So the different categories are there. So accordingly samples are to be drawn from each stratum. Then the investigator will be able to reach in the conclusion and can draw inferences for the purpose of a enquiry. So this is about stratified random sampling. So now there are some merits and demerits under this method. Stratified random sample रे केते merits भी अच्छी, केते demerits मध्य अच्छी, केते सुविधा अच्छी और केते असुविधा मध्य अच्छी. So what are the merits? So first merit, as samples are taken from the different stratas or groups, comparisons become easy. कारण जितेबाला आम सैंपल ड्र करछे विभिन्न ग्रुप रु विभिन्न वर्ग रु तेणुकु आमको माने तुलना करवा सहज साध हुए. It is very easy to compare because the data are taken from different groups and subgroups. So this is one of the merit आमर एटा सुविधा जोटा कि आम सहजरे तथ्यर तुलनात्मक विचार करथाऊ. ये प्रथम सुविधा. आउ कौन सुविधा अच्छी? मोर यूनिट्स कैन बी रिप्रेजेंटेटिव इन दिस मेथड. एथरे आम अधिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं परिबा, डाटा रिप्रेजेंटेटिव नहीं परिबा, विभिन्न माने ग्रुप डाटा दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप. So it is also very beneficial for the investigator to draw the inferences or conclusions. The third one is, as this method is a mixture of a purposive and a sample method, it becomes very suitable. This method becomes very fine, very suitable as it is a mixture of a purposive sampling and simple random sampling. So दुटा को मिसिक रोचे आम यार मेरिट्स तार मध्य मेरिट्स किछ पाउचे एवं आमको माने सहजरे आम कौन सी सिद्धांत पहुँची पारिबा, उपसंहार पहुँची पारिबा, निर्दिष्ट नीति निर्धारण करि पारिबा, ये सब सुविधा रही stratified random sampling. So there are some demerits also. एतर मध्य केते दोष दुर्गुण रही. This method is applicable only when the investigator is familiar with the universe in every situation. जदि investigator familiar न हुए, acquainted न हुए universe सहित every situation सहित, this method fails to operate. It is inapplicable if the investigator is not familiar with the universe in every situation. It is one of the demerit. The second demerit is it is very difficult to divide the universe, which is not an easy task. कारण जिते आम डिवाइड करछे गोटे यूनिवर्स को बा गोटे ऑर्गेनाइजेशन बा गोटे सामग्रिक जिनस को आम डिवाइड करछे, so the division becomes not so easy task.
some problems will be arisen. So the investigator will take the care, failing which this method will not be success. And last demerit, if the universe is not divided properly into different components, then the investigation may lead to biasness. जदि आमे यूनिवर्स को जदि समग्र ऑर्गेनाइजेशन बा समग्र माने तथ्य जोटी अछि आमे ताकू डिवाइड प्रॉपर्ली न करिबा ताहले इन्वेस्टिगेशन ठीक हेबनी एवं रिजल्ट ठीक आसीबनी एवं बायसनेस रहइबो पर्सनल प्रेजुडिस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. So these are demerits. So care must be undertaken by the investigator of the such and such defects so as to make the stratified random sampling will become wide success. So ये है our second method. Now we come to third method of sampling. तृतीय पद्धति systematic sampling. Systematic sampling is otherwise known as quasi random sampling. Quasi. So in this method all the units of the universe are arranged chronologically, alphabetically and geographically. जो आम तथ्य संग्रह करिबा ताको सीरियली आम ताको अरेंज करिबा alphabetically and geographically, then samples will be collected. So I will give an example. So if the total number of units is 1000, so that is a numerical example we can see. If the total number of units is 1000 and the investigator want to a sample of 50, then sample size will be 20. Now 1000 is divided by 50, so universe is 1000, sample was 50, divided by 20. So now the figures you can see 7, 7, then come to 27, then come to another is 20, 40, 7, arrange systematically 67 plus so and so 1980, 7 and so on. So that data are drawn systematically, or you can say 7, 27, 47, 67 and so on 1967, 1987. So now here the initial serial number is 7, then the equal interval is 20, it is 7 the kuche interval of 20 achi. So it is arranged chronologically, systematically. So it is called systematic sampling. So there are some merits of systematic sampling. The systematic sampling is a very simple method. It is very simple and easy method. आमे सहजरे आमे ए मेथड को ग्रहण करि परिबा. There is less chance of biasness. एतरे biasness न थाए, पर्सनल प्रेजुडिस नाही, कम अछि, कारण प्रभावित होबार चांस भी नाही, कारण आमर जो अनुसंधानकारी तथ्य द्वारा प्रभावित हेबो नाही. The third merit is each unit is representative. प्रत्येक यूनिट एकक मध्य रिप्रेजेंटेटिव as units are taken from the whole universe. जेतु आमे यूनिवर्स रो आमे सैंपल नैचे तो प्रत्येक यूनिट मध्य रिप्रेजेंटेटिव. So it helps the investigator, it helps the enumerator to analyze the data with the help of samples for drawing inferences and conclusions for the purpose of inquiry. So these are the merits. There are also certain demerits. माने यही पद्धति मध्य अनेक दोष रही, दुर्बलता रही. कौन से गुड़िक आमे से गुड़िक आलोचना करिबा. So this method is applicable only when the investigator is familiar with the universe in every situation. जदि इन्वेस्टिगेटर जदि यूनिवर्स तो फैमिलियर नुहे तेबे
मेथड एप्लीकेबल हो पारिबनी प्रযোज्य हेब नाही कारण if the investor is familiar, is acquainted with the situation, then the investigator will prepare the groups, subgroups, and then draw the sample for the purpose of investigation. So now this method is applicable only when the investigator is familiar with the universe in every situation. Now next demerit is it is very difficult to divide the universe, which is not an easy task. माने गोटे यूनिवर्स को आम डिविजन करवा एटा गोटे सहज काम नुहे. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिवाइड द यूनिवर्स, तो इट इज नॉट easy task. The next demerit दुर्गुण होउछि कोन, if the universe is not divided properly into different components, the investigation may lead to biasness. प्रभावित होबार बहुत चांसेस भी अच्छे कारण यूनिवर्स जो अच्छी जो आम तथ्य नौचे समग्र जो संस्थार जो तथ्य नवा जदि आम ठीक भाव प्रॉपर्ली माने कंपोनेंट तैयारी न करबा, ग्रुप न करबा, सब ग्रुप न करबा, ताले आमर इन्वेस्टिगेशन पर्पस भूल हो, आम रिजल्ट मध्य भूल हम, आम इनफॉरमेशन जो ड्र हम दैट विल बी मिसलीडिंग. सो दीज आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ systematic sampling. Now we come to next fourth, that is called multi-stage sampling. जो नमूना को आम डिफरेंट स्टेज रे कलेक्शन करुचे, डाटा इज कलेक्टेड at different stages. So now in this method sampling is undertaken on stage by stage. Then the entire universe is divided into some clusters from which samples can be drawn from each cluster. Cluster आमे कहि परिबा डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर नहीं परिबा, आमे ब्लॉक क्लस्टर नहीं परिबा, पंचायत क्लस्टर नहीं परिबा, विलेज मध्य क्लस्टर नहीं परिबा. From each stage sample is to be drawn. So it is very essential for decision maker, for policy makers, for drawing logical conclusions. I will give you an example. मैं तुमको उदाहरण दे पारे. देखो, if we have to select districts at random, जदि आम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करवा ता तले जी रहिला ताकू मते सिलेक्ट करवा, ताले आमे तथ्य ठीक पाई परिबा नाही, नमूना ठीक आसीबनी. जदि आम डिस्ट्रिक्ट को नबा रैंडम नबा ताले ब्लॉक को नबा, then block, then village. Here each item has a chance of being selected. प्रत्येक यूनिट रो चांस रही सिलेक्शन पाई, has equal chance to be selected. So under this method we found some merits and also some demerits. एई पद्धति रे आमे देखिबा केते सुविधा अछि केते असुविधा मध्ये अछि. So under this method we can say it covers large area. आमे अधिक एरिया नहीं परिबा कारण जेतु आमे सैंपल ड्रॉ करछे large area will be included कारण because there is cluster. So it covers large area. The second merit is using samples again and again, it can reduce the number of units at will. जदि आमे सही तथ्य को जदि बारंबार आमे करिबा ताले आम रिड्यूस नंबर रिड्यूस हो जिवो, यूनिट रिड्यूस हो जिवो. And lastly आर सुविधा कोन अछि, it is a flexible method as compared to other methods. The investigator can change the sample according to nature of the investigation. माने अनुसंधानकारी तार जो इन्वेस्टिगेशन जो अनुसंधानकारी तार जो इन्वेस्टिगेशन करुच्ची तार नेचर कौन को टाइप रो इनफॉरमेशन ताको डिजायर करुच्ची से तथ्य ही से कलेक्ट करिवो. सो नाउ इट इज ए flexible method, not rigid, so as compared to other methods. So these are the merits of
this method? Now, in multi-stage sampling, so there is also demerits. So, when a large area of enquiry is taken, then investigator will not find easy to do. कारण जदि एरिया पर ऑपरेशन लार्ज है तेणु अनुसंधानकारी कष्टकर कारण एनक्वारी करवा टे कष्ट सैंपल ड्र करवा टे कष्ट कारण तार डिविजन दरकार तार जो यूनिवर्सिटी तथ्य जो संग्रह कराऊँगी तार डिविजन करवा कष्टकर. तो अनदर डिमेरिट इज कौन ना वी कैन यूज सिंगल स्टेज रैंडम सैंपलिंग टेकिंग ऑल द यूनिट्स at the lowest level. कारण आम जो सिंगल स्टेज नौचे sampling single stage random sampling, so taking all units at the lowest level. So the sample may not be good for the investigator for its analysis. So another demerit is there are numerous errors in this method. इधर एरर अधिक कारण जेहेतु एरिया ऑफ ऑपरेशन इज लार्ज कारण माय डिफेक्ट इज दैट सो देयर इज नंबर ऑफ एरर्स वी कैन फाउंड हम अधिक एरर देखा कारण आम जे सेंसस मेथड एरर इज लेस हियर वी कैन से दैट इज आल्सो सैंपलिंग एरर न्यूमर सैंपलिंग एरर आसीबो भूल आसीबो तेणु ताकू certain precautions are to be taken to remove such error. So these are the merits and demerits of multi-stage random sampling. Now the another is purposive sampling. So आमे अपूर्व simple random sampling बुझुथिले तो तारो different types. Now another is purposive sampling. So in this method the investigator selects the item which are required for the purpose of sampling. इटी purposive रे कौन purpose को उद्देश्य रे तथ्य संग्रहकारी तथ्य डिजायर करूछ बा sample डिजायर करूछ. Accordingly the investigator selects items. What number of samples are to be drawn from the universe, it is to be decided by the investigator. So it is called non probability or subjective sampling. So here selector judges the items of sampling. Who is the selector? The investigator. तो selection करुच्ची माने तार judgment कारण से को लक्ष्य नहीं तथ्य चाहूँची तथ्यर कौन आवश्यकता रही को पर्पस रही को उद्देश्य तथ्य संग्रह करा तो first of all the investigator has to decide and select the items of sample. So the investigator judges the item to be collected. So it is also called judgment sampling. So there are some merits and also demerits. We can see आम एथरे मध्य सही सुविधा असुविधा रही कौन कौन सुविधा रही कौन कौन असुविधा मध्य अच्छी आम जापर. सो पर्पसिव सैंपलिंग रे कौन मेरिट्स रही. नंबर 1 मेरिट यार सुविधा कौन अच्छी इट अवॉइड्स अननेसेसरी आइटम्स. प्रथम कथा है एतरे अनुसंधानकारी अननेसेसरी आइटम को से ग्रहण करे ना जोटे आवश्यकता ना अननेसेसरी जोटे तार जो माने एनक्वारी भीतर जाऊ ना जो पर्पस सैंपल ड्र करुच्ची से ड्र कर. अदर इनफॉरमेशन आर नॉट टू बी इंक्लूडेड. सो इट इज इजी. सेकंड वन इज इट इज इकोनॉमिकल. ये मितव्ययता रही जेहेतु अल्प तथ्य संग्रह करुच्ची तार पर्पस अनुसार तथ्य संग्रह कराऊँगी तो इकोनॉमिकल इट इज लेस एक्सपेंसिव. इट इज लेस एक्सपेंसिव कहीं खर्च कम एत रोच. तो अनदर इज इट हैज ग्रेटर एक्यूरेसी. इधर एक्यूरेसी रोच एक्यूरेट रिजल्ट आसो जेहेतु माने सैंपल साइज स्मॉल है जो पर्पस अनुसार तथ्य संग्रह कराला. तो नंबर ऑफ साइज
of sample is small. So, it has greater accuracy. And last merit is there is a proper representative in nature. So, representative nature, that nature, that unit, that item represents the whole universe. There is also some demerits, एत दुर्गुणता रही दोष दुर्बलता रही. there is chance of personal bias. जदि इन्वेस्टिगेटर ठीक भाव सिलेक्ट न करे ताले तार पर्सनल बायसनेस आसब प्रभावित हम आउ ठीक समय जदि सिलेक्शन ठीक न होला ताले तथ्य ठीक सिलेक्ट न कला ताले आमर इन्फरेन्सेस बा सिद्धांत भूल बा कनक्लूजन भूल. दिस मेथड इज अनसुटेबल फॉर लार्ज सैम्पल्स कारण दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज सैम्पल्स आर ड्रन. कारण जदि आम बहुत तथ्य संग्रह करवा बहुत सैंपल ड्र करवा दिस मेथड इज अनसुटेबल. कहीं ना जो मेथड अच्छी जो पद्धति अच्छी आम गोटे छोट पर्पस जो उद्देश्य नहीं से पर्पस से तथ्य संग्रह करवा. जदि एकाधिक तथ्य आमको नमूना संग्रह कर दैट मेथड become inapplicable. So, there is another demerit is unequal chance for all items. There is no chance for all items. Few items are to be selected in the sample. So, it fails the chance for all items to be selected. So, another is a purposive sampling. So, purposive sampling is of two types such as quota sampling and convenience sampling. So, quota sampling means, so in this sampling the whole universe is divided into different parts. Whole universe को समग्र को हमें भाग भाग करिवा different groups, subgroups, and each part is known as quota. Then the investigator examines the quota selection. केते परिमाण रो से sample draw करिवो, that is quota, is to be decided by the investigator. So, in this method that is certain merits and demerits. So, one of the merit, it is more reliable कारण quota is selected, few units are taken into account. So, it is more reliable, error is less. So, another is merit is it is less expensive कारण एतरे खर्च कम अधिक व्ययबहुल नुहे, it is less expensive. It gives better results. ये सैंपलिंग के हमको अधिक भल शुद्धता मिले, better result मिले. So, these are the merits. There is also certain demerits. इधर मध्य दुईटी दुर्गुण रही. गोटे दुर्गुण है there is difficulty in estimation of sample error. So, sampling error calculation is very difficult in this method. So, another is there is greater scope for mistake. इधर mistake हमारा स्वाभाविक विभिन्न प्रकार भूल भटका रोचे कहीं ना जिते बड़े माने कोटा सैंपलिंग रे केते बड़े तथ्य संग्रह सैंपल सिलेक्शन होची, there is greater scope mistake when samples are to be selected. And last one is convenience sampling. So, in this method the investigator selects samples on the basis of convenience. According to the convenience, according to will of the investigator, the data are to be selected. If the investigator wants to know the problems faced by the farmers in a particular crop production, then some units are to be selected according to the convenience of the investigator. It is called convenience sampling. जदि आम गोटे क्रॉप रो प्रोडक्शन विषय जानिबा तो इन्वेस्टिगेटर हैव टू सिलेक्ट व्हाट टाइप क्रॉप्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. Accordingly, the production data will be selected. Then under this method there are certain merits and demerits. So, merits means it is less expensive, same thing, it is suitable for pilot surveys, it is easy to command and simple to follow, and demerits are it is affected by personal bias of the investigator. माने ये जो मेथड रे माने देयर इज पर्सनल प्रेजुडिस कारण इन्वेस्टिगेटर तार प्रभावित होवार चांस अच्छी कारण जो सिलेक्शन करछि अकॉर्डिंग द कन्वीनियंस अच्छी तेणु से सिलेक्शन करछि. सो दिस गिव्स अनसैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स and it is non representative, that sample will not represent the whole universe. So, it is one of the demerits. So, this is all about the merits and demerits of convenience sampling.